इसमें से कौन होगा? कॉमन सेंस, प्रेजेंट वर्ब। एक्चुअली PW देना चाहिए, बट नहीं बोला, ठीक है, P इज प्रेजेंट वर्ब, P इज प्रेजेंट वर्ब, PW देना चाहिए था। ओके, देन बैंकर गेन इज अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन, बैंकर गेन इज कैलकुलेटेड ऑन व्हाट? नीचे, एकदम नीचे था, बैंकर गेन इज कैलकुलेटेड ऑन व्हाट? बैंकर गेन इज अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन व्हाट? True discount. It is on true discount. Correct? Correct, दोस्तों? Then next one, eighth one. The mark price is also called as cost price, selling price, list price, invoice price. List price. LCM MP. LCM MP. Cost price नहीं आएगा. Mark price. Mark price can be called as LCM MP. हर्ष मेहता. LCM MP ना बेटा, इसका LCM MP, 5 names, all means one and the same. L for list price, C for catalog price, M for marked price, another M is market price, and P is printed price. Okay, ठीक है. When only one discount is given, only one discount is given. What do you mean by one discount? अभी पहला discount, which is the first discount? Which is the first discount? Yes, straight discount. तो आपका होगा LP माइनस ट्रेड डिस्काउंट, TR लिखता हूं मैं. ट्रेड डिस्काउंट will give you what? LP, that is list price, minus trade discount will give you what? Invoice price. Minus cash discount will give you what? NSP. Correct? Now this cash discount is not there, or cash discount is 0. अगर cash discount नहीं है तो क्या हो जाएगा? Think of, there is only one discount. One discount means trade discount. One discount means first discount. First discount is trade discount. अगर cash discount नहीं है तो क्या हो जाएगा? IP minus nothing. So NSP and IP will be same. देखो अभी किधर है? IP and NSP. Option? Which option? Which option? B. Next, difference between face value. Face value means sum due, and present worth is called as. The difference between face value, that is sum due, and present worth, अपन कैसे लिखते हैं? Present worth minus true discount is sum due. So that means what I can write is PW minus true discount is equal to sum due. Sum due को इधर लेके आओ और true discount को उधर लेके जाओ. What it will be? Sorry, plus. Sorry. Yes, thank you. Hazel, thank you. Present worth plus true discount is sum due. अब ये present worth को साइड चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा? True discount is equal to sum due minus present worth. So what is the answer? B. Any doubt? MCQs are over. Any doubt? Next, fill in the blanks. Let's start with the fill in the blank.
अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल, जो बिल ड्रॉ करता है उसको क्या बोलेंगे? द पर्सन हु ड्रॉज द बिल, ड्रॉ करने वाला, ड्रॉवर, ड्रॉ करने वाला, ड्रॉवर, द वन हु ड्रॉज द बिल इज ड्रॉवर. एंड द वन हु एक्सेप्ट द बिल, जो एक्सेप्ट करता है उसको ड्रॉवर, ड्रॉवर इज सेलर, ड्रॉवर. Drawee. Okay, let's go to the second one now. And dash is an agent who sells a good by auction. Is he a auctioneer? AUCTIONEER. Auctioneer. Trade discount is allowed on dash price. Trade discount किस पे दिया जाता है? Yes. In fact, even if you write your market price, mark price, catalog price, printed price, तो भी बराबर देना है. But generally it is known as, popularly it is known as list price. So better to say list price. Actually 5 में से कोई भी correct देना चाहिए उनको. So better go for list price. Okay? पहला नाम L है ना, तो उससे जाओ. The banker discount is also called as, ये किसको याद आता है? Banker discount is also called as, anybody remembers it? Yes, good. Partial discount. किया था अपन लोग, थ्योरी में किया था. कमर्शियल डिस्काउंट पूरा लिखो उधर. ओके. The banker discount is always dash than the true discount. Banker discount is dash greater than, more than. Okay. You may say greater than, you may say more than. More than, otherwise you may say greater than also. चलेगा. Either greater or more. Anyone will do. The difference between banker discount and the true discount is called as banker's gain. The date by which the buyer is legally allowed to pay the amount is known as legally allowed to pay. Yes, LDD, legal due date. Legally, so legal due date. Okay. Yes, the next year on the right hand side here, a dash is an agent who brings together buyer and seller. बायर एंड सेलर को दोनों को साथ में लेके आने वाला कौन है? कौन सा एजेंट? ब्रोकर. ब्रोकर, सॉरी, BROKER, सी नहीं आएगा. वन सेट. ब्रोकर. ब्रोकर दोनों को साथ में लेके आता है. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, CA फाउंडेशन, CS सीट, बैंकिंग, रेलवे, SSC MBA एंट्रेंस, SYJC कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें,
और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की, प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट और दोनों तैयारी को का साथ में लेके आता है। यस, ब्रोकर, करेक्ट। ब्रोकर को कमीशन किधर से मिलेगा? दोनों जगह से मिलेगा ना, बायर एंड सेलर। ब्रोकर गेट्स कमीशन फ्रॉम बायर एंड सेलर, तो हिज जॉब इज टू गेट बायर एंड सेलर टुगेदर, इसलिए वो दोनों के पास से कमीशन लेगा। इफ अ बायर इज अलाउड बोथ ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट, then dash discount is first calculated on dash price. अगर दोनों डिस्काउंट दे रहे तो पहला कौन सा डिस्काउंट आएगा? ट्रेड डिस्काउंट आएगा, ट्रेड। And trade discount is calculated on what? List price. Can be called as catalog price, can be called as market price, can be called as mark price, can be called as printed price, but better use list price. Dash is equal to list price in bracket catalog price minus trade discount. लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? इनवॉइस प्राइस, आईपी। बट आईपी शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, पूरा लिखेंगे इनवॉइस प्राइस। So with this, your fill in the blanks are over. Any doubt? Any doubt with the fill in the blanks? Then true and false now. In your exam also you have objective questions, okay? State whether each of the following is true or false. Broker is an agent who gives a guarantee to the seller that the buyer will pay the sale price of the goods. False. Instead, to make it true, what do you do? Broker को change करना पड़ेगा। क्या करेंगे broker को? If I want to make this statement as true, who gives guarantee? Del creditor. ब्रोकर के जगह पे क्या होना चाहिए? डेल क्रेडर। इफ डेल क्रेडर देन ट्रू। If del creditor then true. No. In the exam you have to just write true or false. Write this sentence followed by true or false. You don't have to rectify and write. But मैं कर रहा हूं यहां पे। ओके, लेक्चर्स में हम लोग कर रहे हैं। इन द एग्जाम यू हैव टू जस्ट राइट। देखो क्वेश्चन देखो ना, रीड द क्वेश्चन। अभी कभी भी ऐसा डाउट आएगा ना तो क्वेश्चन पढ़ने का। क्वेश्चन क्या बोला इधर? स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स एंड रीराइट करेक्ट, ऐसा बोला है क्या? हियर आई एम गिविंग यू एक्स्ट्रा नॉलेज कि क्या होगा। ओके, चलो। कैश डिस्काउंट इज अलाउड ऑन लिस्ट प्राइस। False. This statement can be corrected in two ways. Cash discount, I want to keep that cash discount, I want to change this. क्या लिखो इधर? Cash discount is calculated or is allowed on. नहीं, मेरे को I don't want to change the first one. I want to keep it as cash discount. Yes, then it is cash discount is allowed on list price. And if I want to change, I want to change the first word, then आता था अगर पहला वर्ड चेंज करना है तो सॉरी इधर आई वांट टू चेंज दिस। ट्रेड डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन लिस्ट प्राइस। नेक्स्ट, ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन कैटलॉग प्राइस। थर्ड वन, ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन कैटलॉग प्राइस। ट्रू। फॉर ट्रू आई एम पुटिंग अ टिक मार्क। ओके, ट्रू। A buyer is legally allowed 6 days grace period. How many days? This is false. Grace period is of 3 days, not 6 days. Because of 6 days, it is false.
Fifth one, the date on which the period of the bill expires. Period of the bill expires is called as nominal due date. True. Expires on. True. Nominal due date. The difference between banker discount and true discount is called as sum due. False. What it is called as? False. False. Banker's gain. Yes. The next. Banker discount is always lower than true discount. False. Always more, always greater. This is false. Higher, yes. The banker discount is also called as commercial discount. Banker discount is also called as commercial discount. अभी अभी आके गया. True. In general, cash discount is more than trade discount. ना ये आपको बता देता हूं, ऐसा कोई रूल नहीं, कोई भी बड़ा हो सकता है. False. You can't say anything. You can't make such statement. Sometimes cash discount is more, sometimes trade discount is more. There's no rule as such. कुछ भी हो सकता है. Clear? Clear, dear student? False हो जाएगा. Anything can happen. Even if they have said na general cash discount is less than, तो भी false. Less than बोला होगा ना तो भी false. You can't make such statement. ऐसा स्टेटमेंट हम लोग कर नहीं सकते. कोई भी ज्यादा हो सकता है, कोई भी कम हो सकता है. ओके? Yes. चलो. A person can get both trade discount and cash discount. दोनों मिल सकता है क्या? Yes, you can get. You can get only trade discount. You may get only cash discount, or you can get both also. कुछ भी हो सकता है. Okay? चलो. So objective questions over. Any doubt with objective questions? Now we'll start with miscellaneous exercise, page number 12, question number 1. Objectives over. Now I'll read the question and then we'll decide from where it is. देखो, a salesman get commission. Commission broker तो एकदम पहला पार्ट याद है क्या? फर्स्ट पार्ट वाला है. सेकेंड पार्ट में क्या था? ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, देन कॉस्ट, प्रॉफिट, ये सेकेंड पार्ट था. देन बैंकर्स गेन, बैंकर डिस्काउंट, ट्रू डिस्काउंट है थर्ड पार्ट था. 3 पार्ट है चैप्टर के. तो ये कौन सा पार्ट का है? कमीशन बोला है. तो फर्स्ट पार्ट कैसा है? 6.5% on total sales made by him and bonus is 1% on sales over 50,000. Dear student, I hope you remember how to write this. How to write sales over 50,000 mathematically. ये कैसे लिखने का कुछ बताया था मैंने? Yes, the rest is correct. Others, yes, Urvi correct. Yes, sales minus 50,000. Sales over, sales का sales ही रहेगा. Over will be converted by a minus sign, minus and 50,000. So what do you mean by sales over 50,000? Sales over 50,000 means in bracket sales minus 50,000. Correct? Do you remember this? Yes. Then find his total income on turnover. What do you mean by turnover?
The student, commerce students, do you know a word called as turnover? Turnover is another name for sales. Turnover is another name for sales. Sales 75,000. Okay, let's start with the answer. क्या ढूंढना है दोस्तों? What do you want to find out? Total income. What will be total income? When you say total, means something plus something. Total. When you take total, total income will be is equal to, in this question, what he is getting. What the salesman is getting here. Only commission. Only commission. Not commission, not just commission.